I am Shikha. Welcome back to our Supergrads YouTube channel. And today we'll be talking about the exam pattern of all the IIMs. तो IPM प्रोग्राम के लिए जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ देयर आर टोटल 5 IIMs जो IPM प्रोग्राम पढ़ाते हैं. पहले तो ऑफ कोर्स यू हैव योर IIM इंदौर, सेकंड प्लेस पे है IIM रोहतक, थर्ड इज IIM रांची, फोर्थ इज IIM जम्मू एंड फिफ्थ इज IIM बोध गया. अब हर रिस्पेक्टिव आईआईएम का सिलेक्शन प्रोसेस एक दूसरे से डिफर करता है, विच इज व्हाई आई एम हियर टुडे. तो हम डिटेल में एक एक आईआईएम के टोटल सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करेंगे. Of course, we will start with IIM Indore first because IIM Indore was the first institute to start with their IPM program back in the year of 2011. And IIM Indore के केस में there are two rounds total. पहला आता है एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकंड यू हैव योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड. बेस्ड ऑन दीज टू राउंड्स योर फाइनल स्कोर्स आर मेड अप एंड इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है. तो पहला राउंड दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट राउंड हैज अ टोटल ऑफ 3 सेक्शंस. फर्स्ट सेक्शन है क्यूए एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड थर्ड यू हैव वर्बल एबिलिटी एमसीक्यू क्वेश्चंस. अगेन तीनों ही सेक्शंस के लिए 40 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है. मतलब टोटल 120 मिनट्स का आईपीमैट इंदौर का एग्जाम होता है. अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस IIM इंदौर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट बेस्ड ऑन पास्ट इयर्स एनालिसिस वी हैव गॉट टू नो दैट QA essay section has a total of 15 questions, QA MCQ has a total of 30 questions and VA MCQ has a total of 45 questions, meaning 90 questions are asked in the IPMAT Indore exam. Now talking about the marking scheme followed is +4 and -1. मतलब हर सही जवाब पर 4 मार्क्स दिए जाते हैं और हर गलत जवाब पर -1 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो केवल QA MCQ में एंड VA MCQ में फॉलो की जाती है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सो दिस वाज अबाउट योर IPMAT इंदौर's एप्टीट्यूड एग्जाम. सेकेंड कंपोनेंट है पर्सनल इंटरव्यू का. पर्सनल इंटरव्यू हैज बीन असाइंड अ वेटेज ऑफ 35%. तो पर्सनल इंटरव्यू में हेवीली आपसे एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल यू बिलोंग फ्रॉम PCM बैकग्राउंड, तो फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन योर पर्सनल इंटरव्यू. So as you can see, aptitude test score मतलब जो aptitude test आपने दिया है उसको 65% की वेटेज असाइन की गई है एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड को 35% की वेटेज असाइन करी गई है फॉर IPM प्रोग्राम. So this was all about IIM Indore's aptitude test. Next we will talk about IIM Rohtak. रोहतक के केस में भी मोस्टली IIM इंदौर के जैसा ही एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाता है विद अ फ्यू माइनर चेंजेस. सो फर्स्ट चेंज इज दैट लॉजिकल रीजनिंग इज एन एक्स्ट्रा सेक्शन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. सो फर्स्ट सेक्शन यू हैव इज क्वालिटेटिव एबिलिटी, सेकंड यू हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड यू हैव वर्बल एबिलिटी. हर सेक्शन से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन अलॉट किया जाता है. मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. अगेन मार्किंग स्कीम इज द सेम एज IIM इंदौर, +4 एंड -1 की मार्किंग स्कीम फॉलो की जाती है. एंड IPMAT रोहतक के केस में सिलेक्शन प्रोसेस में एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा आता है पास्ट एकेडमिक्स का, मतलब 10th और 12th के मार्क्स का. IIM इंदौर में ये क्राइटेरिया नहीं है बट रोहतक ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं. तो आपका जो कॉम्पोजिट स्कोर होता है, मतलब पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में पहली मार्किंग स्कीम आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट की फॉलो की जाती है, सेकंड इज योर एकेडमिक कंपोनेंट एंड थर्ड यू हैव योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड. नाउ एकेडमिक के लिए 40% की वेटेज असाइन करी गई है, विच मीन्स 20% मार्क्स क्लास 12th के जोड़े जाएंगे एंड 20% मार्क्स क्लास 10th के जोड़े जाएंगे, which means
the personal interview rounds holds a weightage of 15% for IIM Rohtak. Next, we will talk about IIM Ranchi. रांची के केस में आप आईपीमैट इंदौर के ही एप्टीट्यूड टेस्ट कोर्स को यूज किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस में. इसके अलावा दो राउंड्स और आते हैं. तो फर्स्ट इज अगेन योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड मतलब पीआई स्कोर, और सेकंड है एकेडमिक प्रोफाइल मतलब 10th और 12th के मार्क्स. तो जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट हुआ था आई एम इंदौर के केस में वही स्कोर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं. The admission test score has been assigned a weightage of 15%. Personal interview has been assigned a weightage of 30%. Academic profile, 10th or 12th ki marks, have been assigned a weightage of 20%. And 5% weightage has been assigned to the gender diversity component. मतलब female candidates को 5 marks extra मिलेंगे. Now, lastly, we'll talk about IIM Jammu and IIM Bodh Gaya. So, both of these IIMs accept the JIPMAT scores for their selection process. अब जम्मू और बोधगया के केस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि दे डू नॉट कंडक्ट देयर पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स. सिर्फ जिपमैट के स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है. अब जिपमैट में दोबारा 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं: quantitative aptitude, DILR, data interpretation and logical reasoning, and verbal ability and reading comprehension. 33 questions are asked from QA, 33 questions again are asked from DI and LR, and 34 questions are asked from VARC, totaling 100 questions asked in the JIPMAT exam. Marking scheme is the same as before, +4 and -1 की marking scheme follow की जाती है. तो मतलब टोटल आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बनते हैं 132 मार्क्स, डीआईएलआर के दोबारा 132 मार्क्स एंड वीएआरसी के 136 मार्क्स. मतलब 400 मार्क्स का जिपमैट का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है. जम्मू के केस में जेंडर डाइवर्सिटी के कंपोनेंट को एज एन एक्स्ट्रा पार्ट कैलकुलेट किया जाता है, विच मीन्स फीमेल कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा अवार्ड किए जाएंगे. Both Gaya में no such criteria is followed. Only the JIPMAT scores holds the highest of weightage. So this was all about the exam pattern for IPM admissions for all the respective IIMs. If you still have any other doubts, any other queries about the exam pattern or about the IIMs, please make use of the comment section below and let me know your doubts. Thank you everyone for watching this video.